I'm sure you found this useful. And I'm sure you read. It's not about taking a massive action all the time. It's about taking those small steps every single day. Neuro-linguistic programming. Programming brain through language. I transformed as a human being, as a mother. मेरी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव हुई विद माई डॉटर्स, माई रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड. इसके अलावा मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव हुए. यूनिकनेस कमरान भाई की ट्रेनिंग्स में है वो ये है कि व्हेन यू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग्स, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. अब मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे मेरी सारी स्टडी एक तरफ और आज के ये 7 दिन जो है ये बिल्कुल ही मैं एक नया जो है लेसन या एक्सपीरियंस लेके जा. After this training, I can see that the meaning of my life has just changed. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan. Learn from Kamran. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा होता हूँ. मुझे हमेशा उड़ते परिंदे बड़े पसंद आते हैं and I have this feeling that you give me the wings to fly. And now I think मेरी boundaries जो मैंने बनाई हुई थी, जो limitations मैंने बनाई हुई थी, I can't see them now. ये जो beliefs जो चीजें रोकती थी limited, they just what tish नहीं no more अपने confidence के अंदर एक बहुत ज़्यादा boost देख रहा हूँ.
और यूनिकनेस कमरान भाई की ट्रेनिंग्स में है वो ये है कि व्हेन यू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. It's that profession that gives you the ability to help people transform their lives. It has really transformed me. Neuro-linguistic programming. Programming brain through language. It has transformed my personality. When I say that, I'm still the same persona or person that people might think I am, but the way I react to the same situation is completely different than it used to be. हैरान रह गया कि उस एक कोर्स के अंदर जहां साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व थी, एनएलपी भी थी, हिप्नोसिस भी था, उसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी थी. One of the best decisions of my life, one of the best times of my life. Pehle, perhaps you would be just sitting and depressed and anxious, and now I'm up and about. You know, I changed my pattern and all of that, so I'm quick with that. जो यूनिकनेस कमरान भाई की ट्रेनिंग्स में है वो ये है कि व्हेन यू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. अब मुझे यूँ लग रहा है जैसे मेरी सारी स्टडी एक तरफ और आज के ये 7 दिन जो है ये बिल्कुल ही मैं एक नया जो है लेसन या एक्सपीरियंस लेके जा. I transformed as a human being, as a mother. मेरी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव हुई with my daughters. My relationship improved. इसके अलावा मेरे हस्बैंड के साथ मेरे relationships बहुत इम्प्रूव हुए. After this training, I can see that the meaning of my life has just changed. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा होता हूँ. Neuro-linguistic programming brain through language. डीप अंडरस्टैंडिंग आती है अपने मुतालिक, अपनी जात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक. This is one of the first things in my courses. ये जो चीज. I have used one of your techniques in my sales and it closed. अब लगता है कि जो मेरा एक स्किल लेवल है शायद मुझे वो पहले महसूस नहीं हो रहा. क्योंकि I feel like I need it. क्योंकि because I can. Look, I am way better than I thought I would be, you know. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. I transformed as a human being, as a mother. मेरी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव हुई with my daughters. My relationship improved. इसके अलावा मेरे हस्बैंड के साथ मेरे relationships बहुत इम्प्रूव हुए. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा हूँ. Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan. And he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen. And it's an honor to work with someone of his caliber. The thing about Kamran Sultan, he is fantastic, and I highly recommend him for doing his seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan in NLP, you won't find any better. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. Okay, so go see Kamran Sultan. He's a great guy. He does fantastic programs. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran.
Assalamualaikum. I hope you can see me and you can hear me. We will be starting in a minute. Just few technical things. I want to be sure that you are able to see and hear. ऐसा ना हो कि मैं स्टार्ट करूं और मैं बोलता रहूं और पता ही ना हो कि कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है. So इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि मुझे पता हो कि आप यहाँ पर हैं और आप सुन रहे हैं. And there are people joining on YouTube as well. Hopefully I'll be able to check Zoom, it's like YouTube पे कौन है, and I'll be able to guide them as well. Like specifically people who are on Zoom, I requested few things, and one of the things I asked is make sure that your camera is on, and please make sure it's on. Okay. And अगर आपका camera off हुआ, I'm sorry, but I'll have to let you go. You can join on Zoom. You can join on YouTube. Okay. So don't blame me if you are removed from this session because your camera was off. Please be very clear about this. And the other thing is, okay, keep a pen and a notebook with you so you can take notes, because there will be things that you will be going through. I'll take you through some processes. It will help you take some notes and write few things for yourself. मैं बीच में आप लोगों से जो questions करता रहूंगा, so you can type your answers in the chat box, and when you type, hopefully I'll be able to read. Please या तो इंग्लिश में लिखेगा या उर्दू में लिखेगा. मेरे लिए रोमन पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. Okay. So कभी होता है लोग पूरी कहानी रोमन के अंदर लिख देते हैं, और मैं उसको पढ़ने के लिए इतनी कोशिश करता हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा होता. और मेरी उर्दू जितनी अच्छी है उसका शायद आपको अंदाजा हो, अगर आप लोगों ने मेरे कभी उर्दू के नोट्स लिखे हो. अक्सर लोग उसके कहते हैं सर ये जे से नहीं, ये ज़ात से होता है. ये जाल से नहीं, यहाँ पे जे आएगा. सो बहरहाल मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ लिखने की. सो होपफुली आज हम जो सेशन में जो कुछ करेंगे, this will be something which will be useful for you. And as we begin with this session, I welcome each and all of you, and I welcome both your conscious and your unconscious mind in this session. हमारा जो सेशन है इसमें जब थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को I asked you a simple question, or the question I asked was if you have any problem or if there is any goal that you want to achieve, or uska just give me some answers so I can design this session for you. So I had the session in my mind कि मैंने एक session करना है. I had no idea कि session में क्या करना है, because especially when it comes to coaching sessions, coaching is different from training. Training के अंदर ये होता है कि एक agenda होता है, pre-prepared agenda होता है, and I know कि मैंने एक training के अंदर ये चीजें करानी है, तो मैं वो चीजें specifically लोगों को कराते रहता हूँ. लेकिन when it comes to a coaching session, there is no agenda. It's whatever people bring. और जब individual sessions हो रहे होते हैं, so whatever people bring, I actually design that session for the person right then and there. It's like imagine walking into a restaurant, and the chef asks you what you would like to have and then prepares rather than giving you a menu. So training Jyoti, it's like giving you a menu where you select. लेकिन यहाँ पे it's like giving you a menu of possible dishes and then making a dish for yourself. So this is food for thought. So what we will be doing here is based on the feedback जो मुझे मिला आप लोगों की तरफ से, and different लोगों ने different चीजें बताई, all kind of challenges. I'm not going to share anything that you shared with me. That's, I know it, you know it, Allah knows it. Magar, when I looked at it, I found that there's a theme behind that. There's a specific theme in everything that every person had written. And within that theme, there were themes. Okay, so there are some common things. So I wanted to make sure कि इस session में मैं आपको वो चीजें कराऊं that really hit
hit the point, and it's also useful for people, even if you are someone who's watching it on YouTube after a while, and it's been a while when this session happened, and you're just watching it a recording, or you attended it live and now you're watching it recording. My recommendation is a session may sit for 90 minutes if you can. That would be the best thing. And if you can't, then make sure that you complete it in no more than 3 sittings. And इसमें जितनी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, बीच में आप you can take pauses, especially if you're watching it as a recording in YouTube. You can take small pauses in between, or videos जो भी कुछ उसके अंदर आप देख रहे हैं, जहाँ पर exercises होंगी, take a pause, do the exercise, do some reflections for yourself. And for anything that we learn, repetition is the key. Okay? मेरी classes में अगर आप आए, one of the things I say repeatedly is repetition is the mother of skills. So anything and everything that we'll be doing today, repetition is the key here. Okay, so you may experience some shifts inside, you may experience some changes, and you may experience some positive shifts. Those shifts will not last if you do not do your part. Okay, so and I want you to know that in advance, because कभी कभी ऐसा होता है और कि लोग कोई चीज सीखते हैं और सीखने के बाद फिर वो समझते हैं ओके नाउ आई हैव इट, इट्स लाइक हमारी एक बीमारी है ना सर्टिफिकेट्स की, तो लोग जो जैसे ट्रेनिंग्स लोग करते हैं, नाउ आई हैव दिस सर्टिफिकेट, दैट सर्टिफिकेट डजंट टेल यू एनीथिंग, that certificate doesn't mean that you are skilled, that certificate only tells that the person has gone through this training. To get skilled in anything, skill takes time, it takes practice. Okay, और एक हमारे साथ इश्यू ये होता है कि हम इंसान को अल्लाह ताला ने जल्दबाज बनाया है, तो उस जल्दबाजी के चक्कर में हम बस चाहते हैं बस फौरन हो जाए, और उस फौरन के चक्कर में हम बहुत सारी गड़बड़ करते हैं. So before we begin, let's see who we have here. If you can quickly just type in the chat box where you are from, so it will be good for me to know. I can see several faces here. Hina, Mehwish, please put अपने camera on कर लीजिए. Aisha, I'm telling you, if the camera is not on, I'll have to let you go. You can always join on YouTube. It's if you cannot turn your cameras on, feel free to join on YouTube. Okay, no problem at all. You are still in the same thing. If you are not able to turn your camera on, feel free to join on YouTube. So, walaikum assalam. I am seeing number of Abu Bakr, Madiha. Yes, I can see you. Yes, I can see you, Farhana. I can see you. Alia from Australia. Alia, I can understand आपके पास midnight होगी. Australia वाले जो हैं, many years ago I was conducting COVID के ज़माने में, and then COVID के बाद I conducted NLP practitioner and then master practitioner training, and then I conducted hypnosis practitioner training, hypnosis trainers training. मेरा एक student था, he was in Australia, और हमारी class start होती थी यहाँ के सुबह 10 बजे, और वहाँ पे रात ऐसे 12 बजे होते थे, और वो ट्रेनिंग अक्सर क्लास जो है 5-5 घंटे चल रही होती थी. And वो अल्लाह का बंदा, he was the person who was there every single day. And it was like practitioner training was 21 days. Master practitioner was 27 days at that time. And then hypnosis practitioner was 10 days, and trainers training was another 12 days. But he was there every single day. So that's amazing. That shows your dedication to learn and to change your life. So I welcome every one of you. Good to see some old faces. Ahmad, nice to see you. Okay, so let's begin. देखो हमारे साथ हुआ क्या है. हमारे साथ हुआ ये कि हम इस दुनिया में आए, और and this is not आपके साथ मेरे साथ, this is how humans work. Okay, हम जब इस दुनिया में आए, तो हम इस दुनिया में आने के बाद
जब हम आए तो हम बिल्कुल प्योर थे। एक हदीस आपने सुनी होगी जिसका मफहूम है कि कुल्लु मौलूदुन फितरा, हर बच्चा जो है वो फितरत पे पैदा होता है, जिसको हम मैं अपनी, आई एम नॉट एन आलिम दीन, तो मैं बिल्कुल एक इंसान अपनी जबान में ट्रांसलेट करूँ कि जब हम इस दुनिया में आते हैं प्योर होते हैं बिल्कुल। हमारे जहन में कोई सही गलत अच्छे बुरे की कोई नोशंस नहीं होती हैं, बस हम होते हैं। फिर हमारे साथ एज वी ग्रो, समथिंग हैपेंस, जिससे हम एजुकेशन कह लें, हम उसको स्कूलिंग कह लें, हम उसको अपब्रिंगिंग कह लें, हम वॉट एवर नेम वी गिव इट, बट बेसिकली वी गेट कंडीशन एंड देन वी, हमारी क्योंकि शुरू की जो जिंदगी होती है, तो पहले चंद सालों में हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे के ऊपर। हम डिपेंडेंट होते हैं अपने वालिदैन के ऊपर, हम डिपेंडेंट होते हैं अपने बड़ों के ऊपर। तो उसमें जो चीजें हमारे साथ होती हैं उनमें से एक चीज ये होती है कि हमें सही गलत और अच्छा और बुरा उसकी हमें तमीज सिखाई जाती है। उसमें एक और चीज जो होती है वो ये होती है कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जांपल हम जब छोटे थे, हमने अपना कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगी, कोई हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते थे, हमने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और जब हमने एक्सप्रेस किया तो जो हमारे बड़े थे उनके ख्याल में, उनके पर्सपेक्टिव से जो हमारी बात थी वो अच्छी नहीं थी, तो हमें एक चीज कही गई, और वो ये, गंदा बच्चा, गंदी बच्ची। ओके। और जब हमने कोई काम किया जो उनके ख्याल में अच्छा था तो हमें कहा अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची। तो हमारे जहन की कंडीशनिंग होना शुरू हुई, और हमें एक चीज समझ में आई कि अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि किसी दूसरे के मिजाज के मुताबिक सही होता है, इवन दो वो हमारी मर्जी हमारी ख्वाहिश के खिलाफ हो, हमारी अपने नेचर के खिलाफ हो, लेकिन अगर दूसरों के पसंद के मुताबिक होता है, और किन लोगों की जिन पे हमारी सर्वाइवल डिपेंड करता है, इट्स लाइक अगर हमें कोई खिलाएगा तो हम खाएंगे, पिलाएगा तो हम पिएंगे, हम उसी स्टेज में थे। और अगर कोई नहीं खिलाता तो नहीं खाते, और नहीं पिलाता तो नहीं पीते। उस स्टेज में हमें जो भी कुछ जब अच्छा बच्चा वाला मिला, सो वी लर्न ओके, इफ वी कीप अदर पीपल हैप्पी, so we keep getting rewards, and if we do something which makes other people unhappy, we get punished. So हमारे जो बेसिक इंसान की मोटिवेशन होती है जिंदगी में, डिजायर फॉर गेन, अवॉइडेंस ऑफ पेन। Okay, we want to avoid any pains, and we want to gain pleasures in life. So अल्लाह ताला भी कुरान में इंसान को जो मोटिवेट करता है, यानी बेसिक जो जो चीजें इसके, अगर अच्छे काम करोगे, नेकी करोगे, जन्नत में जाओगे, जन्नत में तुम्हें ये सारी नेमतें मिलेंगी। ओके। और अगर बुरे काम करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, और जहन्नुम के अंदर ये सारी चीजें होंगी। सो हमें जो हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, उस अपब्रिंगिंग के अंदर हमें कॉन्स्टेंटली अच्छे और बुरे की जो तमीज सिखाई जा रही होती है, और उस अच्छे बुरे के अंदर सही और गलत की हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही होती हैं। और वो सही और गलत या अच्छे और बुरे का जो पैमाना हमें दिया जा रहा होता है, उसका क्राइटेरिया अक्सर सोसाइटी, लोग, माशरा, हमारे खानदान के असूल, वो वाली चीजें होती हैं। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई भी ऐसी चीज मिली है जो हमें अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, बहैसियत मुसलमान, इसे अमन्ना सदक़ना, जो हमें मिला है वील एक्सेप्ट, विल नॉट क्वेश्चन दैट। लेकिन एट द सेम टाइम, बिकॉज हमारे बड़े भी उन्हीं प्रोसेस से गुजरे थे, हमारे बड़ों के साथ भी वही सारी चीजें हुई थी, तो अब जो चीजें हमारे बड़ों के साथ हुई थी उन्होंने वो चीजें हम तक पास ऑन की हैं। स्पेशली हम इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे जो सोचे, हमारी जो बड़ों के बड़े थे किसी जमाने में, प्रॉबेबली दे वर नॉट मुस्लिम्स। तो अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी, मुसलमान हो गए, लेकिन कुछ रिवाज, कुछ तरीके, कुछ चीजें थी जो कि कल्चरली चीजें थी, जो कि हमारे माशरे के अंदर आज भी एग्जिस्ट करती हैं। नतीजतन हमारी जो डेवलपमेंट हुई, हमारी जो थिंकिंग की जो डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट में बहुत सारी कंटामिनेशन आई, और उस कंटामिनेशन का नतीजा ये हुआ कि हमारे जहन में सक्सेस की कुछ डेफिनेशंस बनी, फेलियर की कुछ डेफिनेशंस बनी, हमारे जहन में अच्छा बाप, अच्छा बेटा, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर होने की कुछ डेफिनेशंस बनी,
और खराब बेटा, खराब बीवी, खराब होने की कुछ डेफिनेशंस बनी। अब वो जो डेफिनेशंस हमारी बन गई, इट्स लाइक कि हमने वो एक फ्रेम लगा लिया अपनी परसेप्शंस के ऊपर। अब हम दुनिया को जो देखते हैं तो उस फ्रेम के थ्रू देखते हैं। अब जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हम उस फ्रेम के थ्रू देखते हैं। और अगर हमारी जिंदगी उस फ्रेम के थ्रू वो नहीं है जो होनी चाहिए उस फ्रेम के थ्रू, तो वी फील के देयर इज समथिंग wrong with us. Okay, and I'm not good enough now. I'm not, I don't accept myself. And as a result, then the way we carry ourselves, तो हम अपने आप को अपनी जिंदगी में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लोगों के साथ, इवन अपने साथ, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, डील करते हैं, तो हमारी वो जो कंटामिनेटेड सोच और वो फ्रेम्ड थिंकिंग है, हम उसके थ्रू कर रहे होते हैं। बट वहां कहीं पर मुझे एक प्योर इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा था, वो मौजूद है। इट्स लाइक बहुत साल पहले मैंने किसी का, आई थिंक एक आलिम, एक दर्शन, वो जो ईमान की चिंगारी है ना, वो मौजूद है, उसको हवा देने की जरूरत है। वो जब हवा दो तो वो चिंगारी जो है ना भड़क उठती है, और वो अगर जब वो भड़क उठे, then there are many changes possible, so मैं हमारी जबान में अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो विल से कि हमारे अंदर वो प्योरिटी जो है, that is there, that real you is there, but over that real you there are these layers of shoulds and should nots and must not and have to, and this is the right thing and this is the wrong thing, and we have accepted all of that. मैं 1983 से हिप्नोसिस सीख 1997 से मैं हिप्नोसिस सिखा रहा हूँ, और इतने अरसे में मेरी जो समझ में आई है हिप्नोसिस की डेफिनेशन, इट्स लाइक अक्सर लोग समझते हैं हिप्नोसिस को वो पेंडुलम दिखा के हिप्नोटाइज करेंगे, "ओए, मेरी आंखों में देखो, तुम सो रहे हो." आई हैव नेवर डन इट बाय द वे, लेकिन दैट्स व्हाट मोस्ट पीपल थिंक इट इज। बट बेसिकली हिप्नोसिस हर वो चीज, हर वो आइडिया, हर वो नोशन, हर वो बिलीफ जो मैंने और आपने बगैर क्वेश्चन के एक्सेप्ट किया है, हर वो अच्छी और बुरी बात जिसको मैंने और आपने बगैर सवाल की एक्सेप्ट किया है, it has hypnotic effect in it, and it is hypnosis. It doesn't mean it's wrong, it doesn't mean it's bad, but it is hypnosis. So if somebody told you that you're a genius, that you will be very successful in life, that you will be very happy, you will have a wonderful life, and you accepted that was hypnosis, good hypnosis, it's working for you. However, if somebody told someone that they'll not be successful because they did not do well in their school, they did not do well in their exams, they are not as good as their cousin, they are not as good as their neighbor's son or daughter, and they are not doing as good as they are supposed to do, okay, and they accepted that was hypnosis too. Okay, so we were all hypnotized in our own ways. And हम NLP में एक चीज कहते हैं, we all live in a trance, but not the trance that we live in is always a working trance. Okay, and that trance that we are in is not always helping us move forward. So वो जो trance है वो हमारे जहन के बेसिक कुछ प्रोग्राम्स बनते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम आम जबान में कहते हैं जी मेरी सोच। So मसला ये नहीं होता कि हम सोच रखते हैं या हमारे जहन में सोच आती है। बेशुमार बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास सेशंस में आने वाले लोग अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, कहते हैं मुझे नहीं पता मुझे ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं। ओके, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, आपको ख्यालात इसलिए आते हैं क्योंकि आप जिंदा है। जिंदा इंसानों के जहन में, दिमाग में ख्यालात आते हैं। जैसा आपका दिल धड़कता है ऐसा आपका दिमाग जो है वो ख्यालात जनरेट करता है, इसकी कोई दूसरी वजह नहीं है। मसला ये होता है, ये मतलब मसला ये नहीं है कि ख्यालात आते हैं, मसला ये होता है कि हम समझ रहे हैं कि जो ख्याल हमें आ रहा है वो ख्याल दुरुस्त है। वो ख्याल जो मुझे आ रहा है वो ख्याल कोई रियलिटी है, ख्याल आपका रियलिटी नहीं है। आपका जो ख्याल है वो एक ख्याल है। सो बहुत सारे ख्यालात में, जो ख्यालात आपके और मेरे जहन में हैं, उनमें से कुछ ख्यालात ऐसे हैं जो हमारे ऊपर नेगेटिवली हावी हो जाते हैं। माँ को ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए,
एक अच्छा शौहर ऐसा होना चाहिए, एक कामयाब इंसान ऐसा होना चाहिए, अगर इतनी क्वालिफिकेशन का है ना तो वो अच्छा है, अगर इसकी क्वालिफिकेशन का मैं तो अच्छा नहीं है, अगर इतने पैसे कमा रहा हूं मैं तो फिर मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर मैं इतने नहीं कमा रहा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, यू नो। और फिर हमारे साथ इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश के लिए पैदा किया है, और इसमें तरह तरह की आजमाइशें आती रहती हैं। अब एक लेटेस्ट चीज हमारे पास आ गई, एआई। ओके, अब एआई जब आई तो बहुत सारे लोग घबरा गए, हाथ पांव फूलना शुरू हुए, जी जॉब्स गई। और आप देखो, एक बात याद रखो, जो शैतान है, शैतान के जो जिस चीज का अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करता है कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराएगा, और शैतान कॉन्स्टेंटली हमको उस चीज से, लाइक एआई आ गया, तुम्हारी जॉब गई। नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस, अगर एआई आया और उसने तुम्हारी जॉब ले ली, तो इसका मतलब ये तुम जॉबलेस हो जाओगे, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास तुम कमा नहीं सकोगे, जिसका मतलब है यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, एंड तुम्हारी सस्टेनेंस खत्म हो जाएगी। इफ यू लुक एट इट सरफेस लेवल पे, दिस इज हाउ इट लुक्स, बट इफ यू गो बिहाइंड दैट, द बेसिक आइडिया इज कि तुम्हारा सर्वाइवल, तुम्हारी सस्टेनेंस, इट डिपेंड्स ऑन योर जॉब। तो तुम्हारा राजिक जो है वो तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा राजिक जो है वो तुम्हारी जॉब है, वो तुम्हारा रिस्क जो है वो तुम्हारी जॉब से आ रहा है। यू सी दैट? डज दिस मेक सेंस? सो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा एक एक ईमान है, और हमारी ईमान ये है कि हमारी जो भी तकदीर है, वो जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारे बनाने वाले ने वो तकदीर लिखी थी, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और हम उस तकदीर को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अलबत्ता हमें जो चीज़ नहीं पता वो ये है कि हमें हमारी तकदीर में क्या चीज़ लिखी हुई है। अगर यूं लिखा हो कि इंसान, मेरा बंदा ये करे तो इसको ये मिले, और ये करे तो ये मिले, हमें ये नहीं पता। सो हम अपने हिस्से का हमें काम ज़रूर करना है, और हम एक अपने आपको, अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, इट्स लाइक इफ यू आर अ होम स्कूलिंग मदर फॉर एग्जांपल, एंड यू वांट टू मेक योर, और यू वांट टू मेक योर रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन बेटर, यू वांट टू बिकम अ बेटर मदर, और यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू गेट मैरिड, and you are not getting married because you think you are not qualified enough, or because you don't have enough money, or sometimes people say I have a goal, I want to achieve a goal. जहां तक गोल अचीवमेंट की बात होती है, एक चीज मैं लोगों के साथ सेशंस में करता हूँ जी, आई आई वांट टू अचीव अ गोल। व्हाट गोल? दिस इज लाइक आशिकों वाली बातें कि जी वो किसी का नाम नहीं बताएंगे जी, किससे इश्क हो गया, मुझे शर्म आती है। देखिए, जब बात होती है ना गोल अचीवमेंट की, इफ यू कैन नॉट से इट, अगर आप अपनी जबान से उस चीज को बयान नहीं कर सकते, तो आप उसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप कोई चीज अचीव, कोई चेंज अपनी जिंदगी में लाना चाह रहे हैं, कोई बेहतरी अपनी जिंदगी में लाना चाह रहे हैं, उसको अपनी जबान से आपको बयान करने की ताकत होनी जरूरी है। दैट्स वन ऑफ द की फैक्टर्स। ओके, फिर वो जो गोल है, इट हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड, इट हैज टू बी क्लियर। इट्स लाइक मैं कुछ करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करने के कोई माने नहीं। यू नीड टू बी स्पेसिफिक। एंड बाय द वे, probably you as you're hearing people on Zoom, you may notice that I'm talking about some of the issues that you mentioned, okay? Some of the things that you sent me. So हम जब किसी इस किस्म की चीजों की बात करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, और मैं एक अच्छा कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, उसके पीछे हमारे अगर फियर्स बैकग्राउंड में चल रहे हो, और वो फियर्स जो हैं उस उस थिंकिंग के रिजल्ट होते हैं जो उस वक्त हमारे जहन में चल रही होती है, तो नतीजतन हम अपना जो असल पोटेंशियल है, जो हम असल अंदर से हैं, हम वो नहीं जी पा रहे होते हैं। okay? और हम एक वो जिसे हम कहते हैं दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। सो आई वांट यू टू डू शॉर्ट क्विक एक्सरसाइज। In a moment, I'm going to take you through a short process. इस process के लिए all you have to do is just sit back and with your eyes closed
follow my instructions. Okay, this is not a hypnosis induction, so you will not be hypnotized, but it will help you see some things inside you. So what I want you to do is I want you to make sure that you won't be disturbed while we are going through this, and that you're going to you are able to experience this fully. If you're watching it in recording, you may want to pause here. Make sure that you will not be disturbed. I understand YouTube पे अगर आप देख रहे हैं, YouTube पे ads भी आते रहते हैं, फिर कभी-कभी बड़े annoying होते हैं. लेकिन as you're watching this, pause it here and make sure that you won't be disturbed, and then continue. And those of you who are live, just bear with me. So all you have to do is just sit back and close your eyes and follow the instructions. So those of you who are with me here on Zoom, are you ready? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Please, कुछ लोगों के कैमरा अभी भी ऑफ है. Yes, sir. I'm ready. My last time I'm saying this, अगर आपकी कैमरा ऑफ है, you can join on YouTube. Okay, I'll have to remove you. Now, by the way, if you think the reason I'm asking you, because when जो भी आपको processes करा रहा हूँ, I need to see कि क्या हो रहा है and how you're responding to it. Okay, मुझे कतन कोई शौक नहीं है आपके चेहरे मुबारक को देखने का. Okay, it's like या आपको YouTube पे दिखाने का. लेकिन when I'm working with people, I need to see how they're responding to what I'm saying. And if I can't, there is no sense in being on Zoom with me. So I'll have no idea कि आप क्या चीज हो रही है. So it's important for you ताकि मैं आपको properly guide कर सकूं. Okay. अक्सर सेशंस के अंदर मर्द हजरात आते हैं और पर्दा करते हैं, पूरे सेशन में कैमरा बंद करके रखते हैं. Okay. And this is what I'm saying. Just think about this. कभी-कभी मेरी ट्रेनिंग्स में ऐसे लोग आते हैं, कोच बनना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं, मगर कोच बनने के साथ जो चाहते हैं बट कैमरे के सामने नहीं आना चाहते. ओके, ट्रेनर बनना चाहते हैं बट कैमरे के सामने नहीं आना चाहते. इट्स लाइक हाउ कैन यू डू दैट? मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं, मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूं, बट पब्लिक के सामने नहीं आऊंगा. एक्सक्यूज मी, इट विल नॉट वर्क. So I tell those people, it's like किसी किस्म के धोखे में ना रही है. Okay, this is not going to work if you have this kind of mindset. So you need to show up. You want to be a successful person, start showing up in your life. If you cannot show up for this small session, and sometimes people don't want to use their names. If you are not confident enough कि आप अपना नाम और अपनी शख्सियत के साथ अपने लोगों के सामने आ सकें, probably you need some really deep inner work first. Okay, get out of that first before you move on to anything. So let's begin with this process. What I want you to do is I want you to sit back and just relax and then close your eyes. And just take a nice, long, deep breath. Inhale through your nose and exhale through your mouth. And just relax, really relax. And as you relax, I want you to imagine that you're standing and in front of you, there are two mirrors. A mirror on your right and a mirror on your left. These are two full-length mirrors. And in one of these mirrors, you see the image of you
that you show to the outside world, the image of you that you carry, the image of you that has all of those shoulds and should nots, must and must nots. The image that's contaminated with ideas, the image that has received conditioning from well-intended people, the image that you are carrying in your life, in the world, in your relationships, in your work, in your family. The image that you may be showing on social media. This person in this image has all of those thoughts that stop you. All of those thoughts that may be causing you anxiety or nervousness or lack of confidence. The image that doesn't make you feel that you're really successful. The image that, that you are not. And perhaps the image that inside says, I'm not good enough. Now, leave this image for us aside for a moment, and I want you to look at the other mirror. And in that mirror, I want you to see the you who you really are, your potential. The you who's free from all of those thoughts. The you that is happy from inside. The you that you really, really are. It's just the you who's free from those thoughts, those ideas, those shoulds and should nots, even the ideas of becoming successful or not becoming successful. It's just you, your you. Uncontaminated you. Now, as you see that you on this side, I want you to notice how it feels to be this you, this pure you. And now I want you to look at the other mirror and notice how that one feels. Now, I don't know about you, but I know that when people do this, generally, one feels really lighter, refreshing, the other feels kind of heavy. There's a difference in energy sometimes people experience when they look at the one that's free as compared to the one that's not. Sometimes people feel that there is more light and more happiness towards the free one, and there is kind of darkness or it's like some unpleasantness
with the other. Now, I don't know about you, but I want you to become aware of for yourself of what it is that you experience as both of you. And I want you to notice if there's any gap that you can sense between these two. And these are both images of you. Now, for now, I want you to just leave these two images where they are and just gently come back. Gently come back and just open your eyes. Okay. And just come back and share some of your experiences. So, what differences you notice. You can type your answers. If you're watching it on YouTube, you can type. Even if you're watching it in recording, you can type. I'll see your messages, comments, and I'll respond to that. Okay, don't worry. What's the difference? What difference do you notice? सर मैं आंसर दूं जी, sure, please. मुझे तो एक साइड पे लेफ्ट साइड के मिरर में तो मुझे अपना बहुत अच्छा लग रहा था मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो गई हूँ और लग रहा था मेरे सामने 1000 लोग हैं मैं भी आपकी तरह लाइफ कोच बनना चाह रही हूँ और हिप्नोसिस एनएलपी और ये सारे कोर्सेज करना चाह रही हूँ और राइट साइड के मिरर में मुझे अपना बहुत डार्क लगा एक सोई हुई लेडी लगी जो कुछ भी नहीं कर पा रही एक कुछ बिल्कुल लेजी गर्ल और बिल्कुल डार्कनेस और कुछ इस तरह से अंधेरा लगा तो मुझे अपने राइट साइड का मिरर मैंने अपना रिमूव किया और लेफ्ट साइड का मिरर मैंने अपना ऑन रखा जिसमें मैं बहुत अपने आप को कामयाब देख रही हूँ और यही फील्ड चूज कर रही हूँ और इसमें मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है Okay, great. Thank you for sharing that, Naila. And who else is also experienced something similar to what Naila has said? Who else can also relate to that? You can raise your hand if there's something similar you've experienced. Okay. So I see यहाँ पे मदिया says एक जानिब अंधेरा और दूसरी जानिब रोशनी एक जानिब भारीपन और दूसरी जानिब हल्कापन and I hope that हल्कापन is on the the good side for you and we can feel light and stress free and others other than frustrated. Who's we for Farhana? It's like speak about your own experience. How do you know what other people are feeling? Okay. एक जानिब कैद लगी दूसरी तरफ रिहाई. Okay. Aisha, a huge difference, but instead of my image, mostly I saw sky and mountains. I don't know why. Okay, that's perfectly okay. The हमारी शख्सियत के जो दो हिस्से हैं, we have a conscious mind and an unconscious mind. हमारे जो unconscious mind होता है, it communicates and responds symbolically. That's why we, जो dreams होते हैं, dream ताबीर रोया, interpretation of dream में कितना बड़ा इल्म है हमारे दीन का भी हिस्सा है, कुरान में उसका जिक्र है. तो जो अनकॉन्शियसली हमें चीजें होती हैं दे आर ऑफन सिंबॉलिक सो इन सिंबल्स के अलग अलग माने होते हैं मैं कोई आई थिंक 2006 2007 से इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो उसको पढ़ रहा हूँ that's one of the things that I do almost on regular basis but it has different meanings so for now you just relax whatever you get okay a huge difference but instead of my image mostly okay so Abu Bakr says, I feel very free when I looked at the unfiltered and felt powerful, full of energy and happiness. On the other hand, with changes, I felt anxious and bound. Okay. Other hand, frustrated. I don't see comments from every person. If you do not comment, I'll not be able to know what to do and may not be able to guide you. So please comment. Ji Sara, you have raised hand. You want to say something? Okay, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yes, like this exercise that you made us go through right now. So I can relate to it because like what you said that we have been programmed in our subconscious mind, by our what do you call elders, the society, the culture. So one has to struggle, to come out of it, right? So when I was looking at my reflection,
in one mirror, I could feel that those subconscious processes I have to, like, constantly struggle to fight through it. But when I look in the other mirror, that is, I can see my conscious person who's always trying to bring a change within myself. So this exercise, I can relate to it because I feel that's how one can bring a change within ourselves. Okay, great. Thank you for sharing that, Sarah. Yeah, you're welcome. And there are a few more comments I see. मुझे first mirror, Sadia says, मुझे first mirror वैसा ही feel हुआ जैसा second mirror. मासूम and बहुत हल्का. Excellent. And Adila says, left mirror comfortable, satisfying, seeing self happy, while on the right bit heavy and coated with responsibilities. Okay. Eamon says, in the left mirror, I feel burdenized to be perfect, and the right mirror, I feel like more relaxed. Now, notice this. It's like there's this constant theme here again. Okay. And that is one is positive, the other is not. Okay. One is more desirable, the other is not. That's the theme. So, but the rest is your explanation of these. Okay. The rest is your way of expressing the positive or not positive. Okay. But there is this thing. So one is pure, free, and the other is in some way contaminated. What we will do next is I'll take you through a process, a simple process, जिसमें हम उन layers को थोड़ा सा take off करेंगे. And you can do this in a number of different ways. When I did this with myself, once I would, what I saw was like this image that's contaminated, that has all of those layers. It's like प्याज होती है ना, जैसे उसकी layers होती है, onion. Just like you're just peeling it off, सारी की सारी layers. So I like to do this kind of thing like physically, by physically moving my hands. So it's like I'm seeing my younger self and I'm like removing those things. Okay. जैसे आप समझो किसी बच्चे को आप कपड़े चेंज करा रहे हो ना, तो उसके गंदे कपड़े आप उतार रहे. Okay. So it's like you see that and you're just removing all of those layers. Okay. Those shirts. This is how you should be. This is how you should not be. This is the right thing. This is the wrong thing. तुम्हारे स्कूल में एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, लिहाजा तुम क्या करोगे, तुम्हारा जिंदगी में क्या होगा, तुम तो अभी से इतने शरारती हो, तुम आगे, all of the kind of things that we have heard. It's different. So without seeing कि ये क्या है, but imagining that there is this layer. And as I said, unconscious mind works through symbols. So those layers, those just represent those contaminations. Okay, we don't need to know what that is. It's like, think of it कि अगर फर्ज करो कि आपके कपड़ों पे या आपके हाथ पे मैले हो रहे हैं, तो आप उसको स्टडी नहीं करते हैं कि जो यहाँ पे तेल लगा है और यहाँ पे कीचड़ लगा है और यहाँ पे क्या लगा है. आपको पता है हाथ मैले, you just wash them. Okay, so in the similar way, when you have an image in which you experience some kind of contamination, heaviness, whatever, just imagine you're just removing that. That's what we will be doing in this next process. Okay, if you're watching it in recording, this is the process where you need to concentrate a bit. So I'll be taking you through this process. So make sure that you do it completely. You may pause the video here, get ready, ask other people to not disturb you. If you're watching it and listening to me in your mobile phone, you can just put your headphones on and then just follow along. Okay. So everyone who is with me, get ready and sit back. So one more thing, I just received a message from someone. Okay, there is it's time for namaz. Please go ahead and do it. नमाज मत छोड़िएगा इन चीजों के लिए. मेरी जिम्मेदारी नहीं है अगर आपने छोड़ी. That's entirely up to you. So yes, please, आपके पास जिसके पास भी नमाज का टाइम है, जाए प्लीज नमाज पढ़िए. Okay, you can do this process recording में YouTube पे, it will be available there. So close your eyes. And take a nice, long, deep breath. Inhale through your nose and exhale through your mouth.
And just continue to relax. And just continue to relax. As you enter inside your mind. And as you relax, I want you to notice which part of your body feels most relaxed. Is this your right hand or the left hand? Your right foot or the left foot? Or some other part of your body that feels most relaxed? So just focus your attention on that part that feels most relaxed. And allow that relaxation to grow deeper and spread. I wonder, how do you feel when you are relaxing really deeply? Like, for example, the last time when you were about to enter sleep. How deeply were you relaxing? If you enter that state of deep relaxation right now, how deep will that be? And what will it be like for you if you double that relaxation? How will you breathe if you double that relaxation? How will your heart beat? How will you feel in your arms and hands as you continue to relax more and more with each word that I say and every thought that you think? And as you do, relax even more. You're not doing anything more than what you did as a child, speaking to you as a child. When you learn to talk, when you learn to walk, when you learn to read, and in that process of learning, you also learn some rules, some ideas about success and failure, some ideas about being good and being bad. Not all the things in everything that you learn was wrong. There were lots of good things you learned, important things, valuable things, necessary things. Many of those things are working for you, serving you, helping you grow, glow. And some of the things you learn
They served you at some point in your life. They were good things, perhaps, at some stage in your life. You see, there was a time when you used to wear clothes because those were the right clothes at that age. You used to play games because those were the right things to do at that time. Now you have grown up. Things have changed. You have changed. So as you continue to relax, going deeper and deeper still, I want you to imagine the two mirrors from the previous exercise. And I want you to look at that mirror where you see that you who has those ideas layered on that are not working. They're causing you to feel stuck, not allowing you to do the best you can to achieve what you can. Ideas which are limiting you, creating inside your mind those patterns of thinking that make you feel that you are not good enough. In your own way, however you like. I want you to begin to let go of those ideas. You can imagine peeling those layers of ideas from that you. You can imagine as if that you is receiving a shower, or perhaps a strong laser light. That's just cutting through all of that contamination. Take your time. There is no hurry. Remove whatever you can easily, because you can. Repeat this process even as you sleep. Remove those layers. Make sure that you remove as much as you can, if not all.
And if you remove it all, great. Let that pure you come through. And make any adjustments you may require so that the image in both mirrors is same or similar, if not the same. You, pure, clean. In your mind, in your imagination, I want you to step up and step into the image that you previously experienced as lighter, brighter, purer, authentic, and step into it. And from this, I want you to look at that you and imagine this authentic you is stepping towards that you, that younger you perhaps, and talking to yourself, that younger self, nicely. Reminding that you that you are pure. Tell that you will be successful. Knowing what you know, understanding what you understand about life. What advice can you give that younger you that will allow that you to grow without contamination? Even though there will be people around telling things, how that little you may grow. I remember when once I was doing that, I was speaking to my younger self. I just said, you will be successful. There will be challenges. There will be losses. But you are stronger. That you will learn. That you will grow. Challenges are part of life. And that's okay. You are stronger. And you may want to hug that. And as you do, I want you to see yourself growing up without contamination. And I want you to imagine yourself going through different stages in your life in your past, growing up without contamination. Feeling that sense of freedom inside, that sense of
freedom, growth inside, knowing that those around you, they had good intentions. They thought well of you, and they did the best job they could have done. So you are thankful for whatever they did for you. And now you have grown up as a free person, accepting only the things that allow you to live authentically. आने दे अपने आप को वापस. And when you get here, come back into yourself, staying calm and relaxed. I want you to see in your mind's eye yourself performing that, showing up in those areas of your life, those challenges that you shared with me, or you started this process with, things that you felt difficult handling. But notice as you show up as this person, whether it's about showing boundaries in your relationships with people, coming as an authentic self, you come as someone who accepts yourself completely and totally. Imagine stepping into those situations, whether it's with your children, your family, it's your spouse, your clients, it doesn't matter. You show up as a person who's free from the idea of other people accepting you, because you know, no matter what, there will be people who will accept you and like you, and there will be people who will not. Because that's how the world works. As you come back, make any adjustments you may require. Keep inside, knowing that you can repeat this process inside as many times as you may need inside. Making any changes that you may require inside. You can allow yourself to slowly and gradually come back and begin to awaken inside. And allow that light of you to spread lightness inside you. And feeling that lightness spreading light inside you, allow yourself to come back at a rate and speed that's most appropriate for you. And when you're ready, only when you are, just allow yourself to come back into yourself as pure light. And when you're ready, open your eyes, feeling lighter. Come all the way back. Okay, you can stretch if you want. Sometimes when we do this, वो सर पे थोड़ा सा हमें भारीपन का सा एहसास होता है थोड़ी देर के लिए, जैसे हम नींद से एकदम से उठे और हमें लगता है कभी कभी सर इतनी जल्दी उठा दिया. Okay. Relax. Okay, so as you come back, welcome back. How do you feel? It would be nice to hear some of your experiences, if not all. Yes, sir. मुझे परमिशन है मैं कुछ कहूँ? जी जरूर बोलिए, फरमाइए.
जैसा जब मैं अपने आप से बात कर रही थी और इन लेयर्स को उतार रही थी तो मैंने अपने सराउंडिंग में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देखी, बहुत एंग्जाइटी थी बहुत ज्यादा, और मैं इसको कट कर रही हूँ और एक फ्रेश नायला, एक नई नायला निकल रही है ना ईच लेयर के साथ। और बहुत सारे बचपन के ऐसे ट्रॉमा पे बहुत सारी ऐसी चीजें मैं देख रही थी कि जो हो रही है कि नहीं कर सकती, उसमें एजुकेशन थी मेरी, उसमें बहुत सारी चीजें थी, तो उसको मैं कट कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ नहीं मैं कर सकती हूँ। और जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं मैं कुछ अच्छी एक एक नई नायला बन के मैं आ रही हूँ। तो वो बहुत सारी हैवीनेस मैं कैरी की हुई थी अपने साथ, तो अब जब मैं यहाँ की खोली तो लग रहा है कि वो काफी सारी जो हैवीनेस थी उसी लेयर्स के साथ कट होके तो खत्म हो गई है। Excellent. Fantastic. Keep it up. Thank you for sharing that, Naila. What else? I see some comments here. Dr. Madiha said, Mashallah, Behtareen, Halka Phulka. Good, Madiha. By the way, if you are thinking of reducing weight, okay, you may still need to do some dieting. Okay. So Sadia says, yes, I don't want to come out. Yes, Sadia, that's a very common thing I've heard. Most of this, like in my classes, live sessions के अंदर, जब classes के अंदर इस तरह की चीज कराऊंगा, like people, sir, इतनी जल्दी उठा दिया. Okay. And so Madiha says, रोशनी से भरपूर, excellent. Abu Bakr, I feel lighter and more energetic. Fantastic. Sadia says, it's relaxing, freedom feeling. That's nice. Okay. Adila says, powerful session, feeling calm and relaxed, positive than seeing my aura before. That's excellent. So, it's like it will be different for different people. As I said, you may need to repeat this process. Yes, Ahmed, I see your raised hand from my ear. Assalamualaikum, sir. Yeah. Walaikum assalam warahmatullah. सर इस एक्सपीरियंस में और इससे पिछली एक्सरसाइज के अंदर एक जो चीज़ मैंने पाई वो ये कि दोनों मिरर्स में मुझे बहुत सिमिलर नज़र आ रहा था, बट एक जो चीज़ दोनों में डिफरेंट थी वो ये थी कि हाउ द वर्ल्ड सीज मी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आई एम ट्राइंग टू लिव माई ऑथेंटिक सेल्फ, बट कुछ ऐसी मामला, कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से आई स्टार्टेड टू डाउट माई पाथ या माई ऑथेंटिक सेल्फ, और फिर मैं वापस जो है वो उस नज़रिए से अपने आप को देखना शुरू हो गया कि जिस नज़रिए से दुनिया मुझे देख रही थी। फिर इस सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जब वो पीलिंग ऑफ लेयर्स जब होना शुरू हुई तो आई फेल्ट लाइक जो चीज़ें मैंने अपने ऊपर इम्पोज की थी बिकॉज द वर्ल्ड वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी, या वो मुझे अपने तराजू पे तोलने की कोशिश कर रहे थे, तो आई फेल्ट क्वाइट लाइटर एंड आई फेल्ट के जो चीज़ जहाँ मैंने स्टार्ट की थी एट वन पॉइंट, जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, तो वो सबसे प्योरेस्ट सेल्फ थी, बट वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है ना वो मैला होता चला गया, वो ब्लर होता चला गया, बिकॉज जो इसको कहते हैं कि रियलिटीज ऑफ लाइफ टकराना शुरू हुई, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस और जजमेंट्स की वजह से मैंने शायद खो दिया अपना वो सेल्फ ओवर द इयर्स। तो पीलिंग ऑफ लेयर में मैं अपने उस यंगर सेल्फ, जब आई वाज इन माय अर्ली 20s, आई मेट दैट वर्जन ऑफ मी, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि वो मेरा टाइम ऐसा था कि आई वाज माय मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ, और मैं सबसे ज़्यादा उस वक्त लाइफ के बारे में एक्साइटेड था, एक्सप्लोर करने के बारे में, और अपने को बनाने और जानने के बारे में। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, अहमद. देखो, हमारे साथ होता ये है कि कुछ सीड्स इम्प्लांट हो गए हमारे जहनों में. ओके, तो वो जो सीड्स इम्प्लांट हुए हैं, they don't just sprout when they were implanted. They sprout at some other time stage in our life. Okay, the thing is कि हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि हमारे जहन में क्या सीड्स इम्प्लांट हुए या हो रहे हैं. Okay, अलबत्ता हमारा इस पे कंट्रोल है
जैसे अगर आपके घर में लॉन हो तो लॉन में घास में वीड्स निकलेंगी, you can't control that, but you can always make sure that you clean that. You understand? आपने घर में अगर दरख्त लगाए कोई और आपके उसमें कीड़े भी लग सकते हैं और खराबी भी हो सकती है और झाड़ भी लग सकते हैं, but what you cannot control all of those things, but there are things that you can do to clean things up. हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, उनमें से एक चीज ये होती है, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है, और वो ये होती है कि हम अक्सर like, and since I'm a Muslim and I speak from a Muslim perspective, तो हमारा एक ईमान का हिस्सा ये है कि हमारी तकदीर जो है वो अल्लाह ताला ने, हम जब अपनी माओ के पेट में थे तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने हमें जो बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है, और उस तकदीर में सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या होगा, क्या करेंगे, एवरीथिंग इज रिटन। और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसने लिखा है जिसके हाथ में खैर ही खैर है, बेदिकल खैर, उसके हाथ में खैर ही खैर है। उस खैर लिखने वाले ने, जो मुझसे मेरी मां से कहीं क्या ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, जिसकी हिकमत मैं नहीं समझ सकता, यानी कि उसने अपनी हिकमत, अपनी मोहब्बत, अपने इल्म के तहत मेरे लिए लिखा है जो भी कुछ लिखा है। अब क्या होता है कि एक उसकी हिकमत, एक उसकी लिखी हुई यू नो एक उसकी लिखी हुई तकदीर है, और एक मेरी ख्वाहिश है। जिंदगी में सुकून जब खराब होता है, जब मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश जो है ये पूरी हो, बजाय इसके कि मैं उसकी हिकमत को समझूं और अपनी ख्वाहिश को उसके ताबे कर दूं। और कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी उस ख्वाहिश को, हमारी बहुत सारी जो चीजें जो ख्वाहिशात वाली होती हैं, उनमें से एक चीज होती है, हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जिस अनसर्टेनिटी है, कि जॉब में अनसर्टेनिटी है, करियर में अनसर्टेनिटी है, रिलेशनशिप्स में अनसर्टेनिटी है, बट द थिंग इज दिस, इस दुनिया की जिंदगी में अनसर्टेनिटी है। आई एम नॉट सर्टन कि मैं ये सेशन कंप्लीट कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता कि मैं मेरी मौत जो है अगले चंद सेकंड्स में आने वाली है, मुझे नहीं पता, एन मुमकिन है। लेकिन मेरा काम क्या है कि मैं उस अनसर्टेनिटी के बावजूद जो है अपने हिस्से का काम करता रहूं। उस अनसर्टेनिटी के बावजूद मैं जब मैं रात को सोऊं, मुझे नहीं पता मैं फजर में उठूंगा, लेकिन मैं रात को फजर का अलार्म लगा के सोऊं। यू अंडरस्टैंड? इट्स लाइक मुझे मेरे हिस्से का काम करना है। मुझे नहीं पता कि दोपहर का खाना मैं खा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, लेकिन दोपहर के खाने के लिए जो भी तैयारियां हैं वो करनी, शाम को खाना मुझे नहीं पता मैं खा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन शाम के खाने के लिए जो करना है वो मैंने करना है। ओके ना? सो उस अनसर्टेनिटी के बावजूद, और जो जो भी आप अगर देखोगे ना दुनिया में, इवन नॉन मुस्लिम्स में भी, जो आप माइंडसेट की बात करो, जो लोग कामयाब होते हैं और नाकाम होते हैं, उनमें एक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कामयाब लोग उस अनसर्टेनिटी, उस फियर, उन तमाम चीजों को एक्सपीरियंस करने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते रहते हैं। और जो लोग आपको दुनिया में जिंदगी में नाकाम की डेफिनेशन में आते हैं, वो होते हैं जो उन अनसर्टेनिटीज की वजह से रुक जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, रुक गए, मोटिवेशन नहीं है, रुक गए। कि कामयाब लोग हैं उसके बावजूद करते रहते हैं। सो इसलिए कॉन्स्टेंटली हमें अपने हिस्से का जो काम है हमें वो करना है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी, मुझे ये नहीं मालूम मेरे नसीब में अल्लाह ने क्या लिखा है। अगर अल्लाह ताला ने ये लिखा हो कि अगर ये काम ये करे तो उसको ये रिजल्ट मिले, अगर ये ना करे तो ये रिजल्ट ना मिले, तो मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, अब अगर मेरा कोई गोल है, सो उस गोल की कुछ कंडीशंस होती हैं। Those of you who have taken my NLP practitioner training, हम इसके ऊपर जब बात करते हैं, आप रिमेंबर हमने जो वेल फॉर्मनेस कंडीशंस होती हैं गोल की, सबसे पहली चीज जो है ना, इट हैज टू बी स्पेसिफिक। इफ इट्स नॉट स्पेसिफिक इन योर माइंड, इफ इट्स जस्ट I want something, I want to do my business, I want to be successful, it doesn't mean anything. So the first condition is it must be very clear in your mind. उसका एक तरीका ये है कि आपके जहन में जो भी गोल है, जो भी आप करना चाहते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपकी करियर से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, राइट इट डाउन।
Okay, so you write down exactly what you want. Then think, in order to be successful, in order to achieve this, how do I need to be? जो हमने एक सक्सेस का फॉर्मूला सीख रखा है, जो हमें एक ऐसे कि गलत फॉर्मूला हमें जिंदगी में सिखाया गया है सक्सेस का, वो ये सिखाया गया है कि तुम पहले कुछ करोगे, आपने सुना होगा वो एक शेर, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अगर आप गौर करो, एनएलपी में हम चीजों के पैटर्न्स देखते हैं, तो इस माइंडसेट में जो चीज बताई गई है, पढ़ोगे लिखोगे, दैट मीन्स यू डू समथिंग, देन बनोगे नवाब, तो फिर देन यू विल बिकम समथिंग। Okay, so first you work externally, do something, and then you will become someone internally, and then जब आप नवाब बनेंगे तो फिर आपकी जबरदस्त जिंदगी होगी, नवाबों वाली जिंदगी होगी। सो जो हमें फॉर्मूला सिखाया गया है वो ये कि फर्स्ट यू डू वर्क ऑन द एक्सटर्नल, and then your internal becomes something, and then you will achieve whatever you want. Unfortunately, that doesn't work. You will find a lot of people जिन्होंने जिंदगी में अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत क्वालिफाइड लोग भी होंगे, जो क्वालिफाइड होने के बावजूद जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचे होते हैं, बिकॉज बहुत हुनरमंद लोग होंगे जो कि अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज उन्होंने वो जो हुनर था उसके ऊपर काम किया, हुनर हासिल कर लिया, लेकिन ये माइंडसेट जो था उसके ऊपर काम नहीं किया। सो जो फर्स्ट चीज जिस पे काम करना होता है, जो the way, the real formula, that the way it works is, first you become someone, you become successful in your mind, you become authentic in your mind, you become free in your mind, you become a good mother in your mind, you become a good father in your mind, you become a successful person in your mind, you become whatever you want to become in your mind first, internally, and then that internal makes it easier for you to take actions in your external life. Okay, देखो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो आयत का मफहूम है और हम सब सुनते हैं, हम सबको पता है, वो क्या है कि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली ना करे। ओके, सो अपने अंदर तब्दीली पहले करनी है, हालत बाद में बदलेगी। हम क्या चाह रहे हैं, हमने इसको, हम क्या हालात बदलेंगे तो फिर हम बदल जाएंगे। और हम अक्सर लोगों के बारे में यही समझते हैं, हम किसी को देखते हैं, देखो वो पहले गरीब था ना तो ऐसा था, अब इसके पास पैसा आ गया ना तो अभी ऐसा हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि ये हालात बदलने की वजह से ये शख्स बदल गया। हालात इंसान को बदलते नहीं, हालात इंसान को जाहिर करते हैं। तो बहरहाल इट्स लाइक आप, यू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो ये जो हम अभी एक छोटी सी हमने प्रोसेस किया है, इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर टाइम कम है और मैं इतने सारे लोगों को लेके कोशिश कर रहा था, सो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है, my expectation and my hope is that you understand that you work on yourself, and in your mind's eye, whatever you want to do, remember, repetition is the mother of skills. So repeatedly reinforce this idea of you are living that authentic self, that successful mother, that successful business person, that successful father, that healthy person that you want to be, that mentally, physically, emotionally calm and relaxed and healthy person that you want to be, and living as that person in your mind, start living that. You will find that जब आप internally अपने आप को चीज पे काम करेंगे, तो आपके लिए एक्सटर्नल दुनिया में चीजों को हैंडल करना, चीजों पे काम करना will become much easier. जब वो चीज आसान होगी, इस दुनिया को अल्लाह ने दारुल अमल बनाया है। तो जब हम एक्शन लेते हैं, यानी अगर हम खाली अपनी इमेजिनेशन में बैठे रहें और हम ये सोचें कि जी हमारे घर में बाग निकल आएगा और हमारी फसल निकल आएगी, नथिंग विल हैपन। सो जो इमेजिनेशन वाली चीज होती है, कुछ लोग इसको गलत, लाइक मैं एक जमाने में सिल्वा के कोर्सेज कराता था, तो मैंने ये देखा कि कुछ लोगों की गलत फहमी जो होती है वो ये होती है कि यूं करके वो बैठेंगे आंखें बंद करके और वो जी माइंड पावर से वो चीजें ठकाठक होने लगेंगी। लाइक आप देखेंगे बहुत सारे लोग वो जो माइंड पावर और इस किस्म के कोर्सेज लोगों को कराते हैं, वो खुद अपने कोर्सेज को मार्केट करने के लिए एक्सटेंसिवली काम कर रहे होते हैं। कभी वो टीवी पे आएंगे, कभी फेसबुक पे आएंगे, कभी यूट्यूब पे आएंगे, तरह तरह से अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग एक्शन, ताकि उनकी क्लास में स्टूडेंट्स आए।
They're not sitting with their eyes closed in some, other dimension where students start showing up in their classes. It doesn't work that way, and they know it. But they may be selling their courses that way. It's like if you just do this and तो फिर आपके पास सब हो जाएगा. It doesn't work that way. अगर ये ऐसा होता तो फिर वो लोग इतना एडवर्टाइज नहीं कर रहे होते, वो मार्केट नहीं कर रहे होते, वो खाली आंखें बंद करके बैठे होते और उनके पास आगे खोलते और उनकी क्लासेस जो है वो स्टूडेंट से भरी होती. इट डजंट वर्क दैट वे, बिकॉज इस दुनिया को दारुल अमल अल्लाह ने बनाया है. तो हम ये जो जो विजुअलाइजेशन है, जो भी चीज कर रहे हैं, बिकॉज हमारा वो जो इंटरनल है, हम उस कंटेमिनेशन को रिलीज कर रहे हैं, सो वी कैन फाइंड आउट द रियल पोटेंशियल इन अस. एक छोटी सी आपको चीज और मैं कराता हूं बिफोर वी कॉल द सेशन ऑफ. एंड आई वांट यू टू, आई आस्क यू टू write few things. I want you to take next, say, 3 minutes. Okay, you can take longer if you want. If you're watching it and recording, you can pause it and take as long as you want. But I want you to think about, I want you to, I'll say some sentences, और उन sentences को आपने complete करना है. Okay? जब आपने complete करना है, आपको मैं एक आधा सेंटेंस, अधूरा सेंटेंस दूंगा, अधूरा जुमला होगा, आपको उसको जो कंप्लीट करना होगा, तो जो इंस्टेंट आपके अंदर से रिस्पॉन्स है, जस्ट राइट दैट. ठीक है, वो आपको शेयर नहीं करना है, वो आपको किसी को बताना नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू. सो बट जो भी आपके अंदर से आए, जस्ट राइट दैट. ओके, सो गेट रेडी. जिंदगी में कामयाब होने के लिए डैश होना चाहिए. I want people to think dash about me. If I want to be successful, I should. If I want to be a good person, I should. If I want to have good relationships, I must. To have successful life, one must. If people do not like me, that means other people are able to succeed because a good person
means a good person should, a good person must, successful people are if I don't do X, if I don't do dash, I will not be successful. So can you repeat, please? If I do not do dash, I'll not be successful. Fill in the blank. अगर मैंने फलानी चीज नहीं करी तो फिर मैं कामयाब नहीं होऊंगा या होंगी. Okay, as a husband, as a wife, as a mother, as a salesperson, as a business person, as a coach, as a trainer. So if you now look at all of these statements, ये सारे जो statements हैं, these are like the rules that you have learned. Okay, these are what form our beliefs. There are a number of things that we can do with this. Now, one simple thing that you can do is, because rather than doing a long process for this, here's what you can do. You can simply take this paper, okay, and simply इसके छोटे 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 टुकड़े करके burn it, जाके कमोड में डालें, flush it, get rid of it. Okay. Because ये वो contaminated thoughts होती हैं अक्सर, जो rules हमने बनाए हुए हैं. It's like अगर मैंने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने वो नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, लोगों को मेरे में ऐसा सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह. The thing is this, people will think of you whatever they think of you, okay? And they'll not think of you because you are this way or that way. They'll think of you because the way that they are. इंसान दूसरे इंसान में अपना रिफ्लेक्शन देखता है. आपको वो लोग जिनमें आपको कोई अच्छाई नजर आती है, आप और करें, वो अच्छाई कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर है. अगर आपको किसी में कोई खराबी नजर आती है ना, वो भी आपके अपने अंदर कहीं पे कहीं होती है. So you can correct it. People show up in our lives ताकि हम अपने आप को करेक्ट कर सकें. और हम बहुत सारी चीजें जो होती हैं, इट्स लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि I'm not making enough money, so that's the reason people are not accepting me. Do I accept people if they're not making enough money? That's the question to ask. You understand? It's like, oh, people don't like me because I do that. Then ask yourself, do I like people who do this? Okay. Reflect on that. You may find that there is new thoughts come on, because हम कोई भी चीज, जो चीज हम समझते हैं कि हम समझ रहे हैं, the reason हमें कोई चीज समझ आती है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मेरी बात आपकी समझ में आ रही है, उसकी वजह यह है कि आपके जहन में ये आवाजें मैं अपने मुंह से निकाल रहा हूं, उनके रेफरेंसेस मौजूद हैं. अगर मैं कोई ऐसी जबान बोल रहा होता जो आपके लिए फॉरेन होती, अजनबी होती, तो आपको मेरी यही मुंह से निकाली हुई आवाजें आपको समझ में नहीं आती. तो आपको वो बात समझ इसलिए आ रही है बिकॉज आपके जहन में पहले से रेफरेंस मौजूद है. सो हमें कोई चीज, जब हम किसी में कोई चीज नजर आती है, कोई चीज सुनाई देती है, कोई चीज हमें पता चलती है, सो इट्स लाइक बिकॉज हमारे अपने इंटरनल रेफरेंस है.
यू नो फलाना शख्स मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या वुड आई बी डूइंग द सेम और वुड आई बी डूइंग डिफरेंट? So think in those terms, you may find that it will give you some more ideas about that contaminations that you have. And then you can simply, as I said, write it, hear it up, get it out of your system, get rid of it. Don't have to think about this, ये सही है, गलत है, किसने बताया, कहाँ से आया, एनालिसिस के अंदर जाए बगैर जस्ट टेक इट आउट, राइट इट ऑन द पेपर, थ्रो इट. सिमिलरली अगर आपको इस तरह की कोई चीज होती है कि जहन आपका किसी चीज पे स्टक हो जाता है या इट्स लाइक ओवर थिंकिंग के अंदर आप जाने शुरू कर देते हैं और बार बार कोई चीज आती है, सिट डाउन, टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट योर थॉट्स डाउन. अच्छी बुरी कुछ भी आपके जहन में सोच चल रही है, जस्ट राइट इट डाउन. लिखने के बाद उसको निकालें पेपर को, उसको बगैर पढ़े उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, फ्लश में बहा दीजिए उसको अपने, अगर आपके पास चूल्हे पे जला सकते हैं चूल्हे पे जला दीजिए, बगैर किसी किस्म के अपने आप को नुकसान पहुंचाए अगर आप कर सकते हैं, बट जस्ट गेट रिड ऑफ इट इन वॉट एवर वे यू कैन. Okay, and you do that repeatedly. Repetition is the mother of skills. Okay, देखिए हम नहाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और हम फिर बाहर जाते हैं दुनिया के अंदर, धूल मिट्टी कपड़ों पे लग जाती है, हमारे पसीने से कपड़ों की स्मेल खराब हो जाती है, तो फिर हम दोबारा नहाते हैं. हम ये नहीं करते यार अभी तो कल तो नहाए थे आज फिर नहाना होगा. कुछ लोग करते हैं ऐसा, अभी पिछले हफ्ते ही तो नहाया था आज फिर नहाना होगा, अगली बारिश में नहा लेंगे. ओके, लेकिन अगर इफ यू रियली वांट टू यू नो स्टे नाइस क्लीन, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. हमारे दीन में तज़किया का जो प्रोसेस है, ओके, तज़किया इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. तज़किया नफ्स ये नहीं है कि हमने जाके कहीं पे किसी पीर साहब की हमने बैत कर ली तो जी अब हम तज़किया हो गया हमारा पूरा का पूरा. दैट्स एन नेवर एंडिंग प्रोसेस. और अल्लाह ताला फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, ओके, कामयाब हुआ जिसने अपना तज़किया किया. सो दैट तज़किया इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. इट्स नॉट समथिंग यू डू इट वंस एंड देन यू आर डन. ओके, so you may need to repeat this process. There's a lot more to it, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा. ऑलरेडी हम टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा हो गए. सो if there's any quick question I can answer for you, feel free to ask. Otherwise, we will call this session off. And I want to thank each and every one and thank each and all of your conscious and your unconscious mind for joining this session today. If you have a question, feel free to ask. I'll answer if I can. I don't have answers to all questions. And inshallah, we'll call the session off. Ji Faraz. Sir, thank you for this session. Very helpful. काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई. एक जो मेरा सवाल था वो ये कि जिस तरह मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आउटसाइड नॉइज जो कॉन्स्टेंटली आ रही होती है, आप अपने आप पे बिलीव करते भी हो, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे भी यू आर ट्राइंग टू योर बेस्ट टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, बट अगर आपका वो ऑथेंटिक सेल्फ एक जो दुनिया के ट्रेडिशन और नॉर्म से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तो एट वन पॉइंट आप कॉन्स्टेंटली वो आउटसाइड नॉइज आपके खिलाफ आपके बारे में सुन सुन के या लोगों के डाउट्स या डाउटफुल बिहेवियर या नजरें देख देख के एट वन पॉइंट यू स्टार्ट बिलीविंग दैट. तो इस चीज को किस तरीके से So आपकी क्वेश्चन में आपका जवाब है. आपके क्वेश्चन में आपका जवाब है. ओके, वॉट यू आर सेइंग इज कि आपको जो बाहर से सब आवाजें आ रही हैं या जो भी कुछ बाहर से आपको इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी कंटामिनेशन आ रही है, जो भी आपको कहा जा रहा है, वो रिपीटेडली हो रहा है, सुन सुन कर उसका असर हो रहा है. एंड what you want to be and who you truly are, you're not repeating that. And anything repeated long enough, whether it's useful or not useful, हमारा जो दिमाग जहन है ना, ये एक आपके लिए एक प्रोसेसिंग मशीन है. ओके, समझो एक कीमे की मशीन है. ओके, दिमाग कीमे की मशीन नहीं है, बट उस कीमे की मशीन में आप कुछ भी चीज डालते हैं, मशीन जो है उसका काम है कीमा बनाना. आप उसमें गाय का डाल दें, बकरी का डाल दें, कुत्ते का डाल दें, गधे का डाल दें, ओके,
वो टीमों बना देगी, बिकॉज मशीन अपने काम पे लगी हुई। मशीन हराम और हलाल नहीं देखेगी, सही और गलत नहीं देखेगी, मशीन अपना काम करेगी। जहन जो है एक प्रोसेसिंग मशीन है। सो वो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आप जो बात कह रहे हैं वो ये कि बाहर से आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू वो काम जो आपको अपने ऊपर करना चाहिए। सो आपने अपने ऊपर काम करना अगर छोड़ दिया है, लेकिन दूसरों ने अपना काम आपके ऊपर करना नहीं छोड़ा है, तो वो काम आपके ऊपर असर कर रहा है और आपको अपना काम नहीं कर रहा। ओके, Okay, sir. so can you imagine what's the solution to that? Ahmed, Yes, sir. Sir, what's the solution then? सर एक जो बात आपकी मुझे से एक चीज क्लिक हुई कि शायद अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना, दैट वुड हेल्प के आप अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, आप अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हो, बट एक इंसान के माइंड में एक एक फितरतन एक बात है, वो सुनता है दूसरों की बात, और शुरू में आप उनसे रिटेलिएट कर रहे होते हो या रिबेल कर So रहे होते हो। I'll stop you here, Ahmed. एक सेकंड ठहर जाओ। देखो, इंसान दूसरे की बात सुनता है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, लेकिन अगर दूसरे की बात मेरे ऊपर असर ज्यादा कर रही है, इसका मतलब है कि मैंने अपने ऊपर उतना काम नहीं किया कि दूसरे की बात को का असर मेरे ऊपर ना हो। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। ओके, ओके सर, सो दैट इज द सॉल्यूशन, बिकॉज देयर इज नो वे कि Raise आप my लोगों के hand. मुंह बंद कर सकें। देयर विल ऑलवेज बी पीपल telling you what's wrong with you. There will always be people telling you what's missing in you. देखो, हमारी क्या औकात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ये कह दिया कि जी आपने इंसाफ नहीं किया है। जस्ट इमेजिन दिस, जस्ट इमेजिन दैट फॉर अ मोमेंट। इट्स लाइक मेरी और आपकी औकात क्या है। हमारे तो गोल भी सारे अपनी जात और अपनी दुनिया और अपनी जिंदगी के बारे में होते हैं, लेकिन कहने वालों ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को इस तरह की बातें कर दी। तो मेरे और आपके साथ विल ऑलवेज बी पीपल, लेकिन हमें अपने ऊपर अपने आप को जो है स्ट्रांग बनाने के लिए काम करना है। इसकी मैं मिसाल अक्सर इस तरह से देखूं, हम सब ने कोविड देखा, हमारे सामने हमारी जिंदगियों में कोविड आया, दुनिया भर में आया, बेहिसाब लोग उसके अंदर मुब्तला हुए और बहुत लोग मरे। लेकिन आप अगर गौर करें कि जो कोविड से मरने वालों की जो तादाद है एज कम्पेयर टू जिन लोगों को हुआ था, जो मरने वाले हैं वो हार्डली 2 से 3% लोग हैं। 2 से 3% लोग थे जो कोविड से जिनकी डेथ्स हुई हैं, यानी 97-98% लोग ऐसे थे जिनको कोविड हुआ अगर वो ठीक हो गए। और जो जिनकी डेथ्स हुई हैं उन उनमें जो कॉमन फैक्टर था वो ये कि उनमें पहले से उनका इम्यून सिस्टम जो था वीक था। तो जब इम्यून सिस्टम वीक था तो बाहर से आने वाला वायरस उनके ऊपर स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहा था। लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, इवन दो वायरस उनके ऊपर आया मगर उसने उनको इफेक्ट नहीं किया। ना अब इस चीज को लेट्स इमेजिन कि जो कोविड दैट्स द इमोशनल वायरस हमारे पास आ रहा है, बट हम इंटरनली इमोशनली हम स्ट्रांग है। जब हम इमोशनली स्ट्रांग है तो वो बाहर से आने वाला जो कोविड है ना, इमोशनल कोविड, वो हमें इफेक्ट करेगा बट विल सर्वाइव स्टिल, विल कम बैक। लेकिन अगर हम इंटरनली वीक हैं, अगर हम इमोशनली वीक हैं, फिर वो जो कोविड आएगा उसके असरार डिफरेंट होंगे। तो द सोल्यूशन इज टू improve your immunity. I hope that answers your question. Think about this, you will find the answer. जी सारा, I see a raised hand. जी, मुझे पूछना था, मुझे आपके जो सेशन है एनएलपी का, लाइक एक होम स्टडी कोर्स है आपका, right? And एक है online course. So what will be suitable for me, because I have not done this before. It's totally new for me, but I like the session you've given us today. So it's been an eye-opening for me. So what's your advice on this?
सो सारा व्हाट इट डिपेंड्स ऑन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप एनएलपी को खाली एक सरसरी तौर पे समझना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट कोर्सेज हैं, मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगी जो होम स्टडी कोर्सेज हैं उसमें मेरा एनएलपी बूट कैंप है या एनएलपी बूट कैंप 2.0 है। ये 3 दिन के शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं विच यू कैन डू वेरी इजीली विद इन 3 days। ओके, ये मेरे जितने भी होम स्टडी कोर्सेज हैं ये मेरी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं। सो मेरा जो एनएलपी होम स्टडी कोर्स है, द न्यू एनएलपी होम स्टडी कोर्स या एनएलपी प्रो या एडवांस एनएलपी, ये मेरी एनएलपी प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। अभी मोस्ट रिसेंट मैंने अपना एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कंप्लीट की है। इसमें से 2 लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने। तो उस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग है, इट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव ट्रेनिंग। उसका मैंने नाम एनएलपी प्रैक्टिशनर या मास्टर प्रैक्टिशनर नहीं रखा है बिकॉज प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जो होती है, जो लाइव ट्रेनिंग होती है उसको प्रैक्टिशनर कहते हैं, तो इसलिए मैंने उसको होम स्टडी वर्जन जो है उसको एनएलपी न्यू एनएलपी होम स्टडी। लेकिन अगर आप उसको वीडियोस को जब देखेंगी तो वो हर वीडियो जो है उसमें आई स्टार्ट विद दिस इज एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग। सो अगर आप इन डेप्थ एनएलपी में जाना चाहती हैं, इन डेप्थ उसको समझना चाहती हैं, देन यू कैन टेक द एनएलपी न्यू एनएलपी होम स्टडी कोर्स और एनएलपी प्रो। न्यू एनएलपी होम स्टडी कोर्स और एनएलपी प्रो दोनों सेम प्रोग्राम है। डिफरेंस ये है एनएलपी प्रो जो है कंप्लीटली इंग्लिश में है और न्यू एनएलपी उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। ओके, सेम वही प्रोग्राम मैंने 2 बार कराया है। सो एक बार कंप्लीट इंग्लिश वर्जन है, सो इफ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश वो इंग्लिश वर्जन ले सकते हैं, एंड इफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ मिक्स्ड ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, सेम मैनुअल है दोनों में, सेम स्लाइड्स हैं, एवरीथिंग इज सेम, कंटेंट वाइज सेम। जाहिर है क्लास साइज और पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से क्वेश्चन आंसर डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज जो चीजें मैंने कवर की हैं, जो स्किल्स आप सीखती हैं, इट्स ऑल सेम। सो अगर आप इफ यू आर स्टार्टिंग यू कैन स्टार्ट विद एनएलपी बूट कैंप अगर आपका मकसद खाली एक सरसरी नॉलेज है, और अगर आप इन डेप्थ जाना चाहती हैं तो बूट कैंप की जरूरत नहीं है आपको। यू कैन टेक आइदर द न्यू एनएलपी होम स्टडी कोर्स और एनएलपी प्रो, whichever you। NLP Pro is the English version, right? Yes, NLP Pro is the English version. Okay, and do we get any interactive sessions in this one with you? So आप मेरी वेबसाइट पे अगर जाएंगी तो आप देखेंगे उसमें मैंने फिर इनरोलमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनरोलमेंट के जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको एक ऑप्शन है कि वन टाइम एक्सेस है। वन टाइम एक्सेस में कोई कोचिंग सेशंस इंक्लूडेड नहीं है। Okay? उसकी कॉस्ट लो कॉस्ट होती है। सो वन टाइम एक्सेस, वन टाइम एक्सेस का मतलब है, सो फॉर एग्जांपल जो एनएलपी होम स्टडी कोर्स है वो 21 डेज का कोर्स है, बट यू विल हैव एक्सेस फॉर 35 डेज। Okay, so within 35 days or 27 days, so you can complete that program within that time period. ठीक है। दूसरा है कि आप उसमें कंप्लीट फुल पेमेंट के साथ है, जो फुल पेमेंट के साथ है उसके अंदर यू आल्सो गेट सम कोचिंग सेशंस विद मी। Okay. Details are on my website. You check that and you'll find that. So anything related to what we did today? This is Abu Bakar. So towards the end, you mentioned that whatever ideas you get, like when you get stuck on that, tear them, write it down, and then tear it or burn it. How about if those ideas are beneficial for us and we think that this is what I should work on, but I'm unable to move forward? If they're making you stick, since Abu Bakar, you have taken NLP training with me, you notice all of these ideas are beliefs. Okay, so you can apply your belief change process on that. You can apply your meta model questions on that, and you're like, how do I know this? Okay, is cheez ka isse kya ताल्लुक? You start questioning that, so you find more clarity. Okay. Anything else? Okay, so thank you very much everyone. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर कभी इस किस्म के सेशन अगर मिला तो करेंगे. So this is it from me today. Thank you for joining. इंशाल्लाह ताला फिर कभी आपसे मुलाकात होगी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.